So, hi everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to my channel and आज हमारे साथ है मोमिना जो कि एक हाउसवाइफ है and currently she's a very famous blogger as well. तो आज हम मोमिना से थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेंगे, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। मोमिना बेसिकली कुवैत से हैं जस्ट लाइक मी। सो हम थोड़ा-सा उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में एंटर हुई एंड अबाउट हर मैरिड लाइफ़ और उनकी अभी किस तरह वो कनाडा में सेटल हुई। तो चलिए हम मोमिना से बात करते हैं। हाय मोमिना, हाउ आर यू डूइंग? Hi Maha, thank you for having me. And I'm not a famous blogger as yet, but I really be one. But I'm inspired from you a lot. That's very sweet of you. You're too kind. You're too kind. नो प्रॉब्लम। तो मोमिना हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ कब आईं कनाडा में एंड आप पहले कुवैत में थीं या पाकिस्तान में? एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा ब्रीफली हमें बता दें। So when I was 3, I moved to Kuwait और फिर कुवैत अपनी सारी एजुकेशन वहीं से की. 15 years of my life I have lived in Kuwait और they were the best years of my life. और उसके बाद then we moved to Pakistan. My parents are still in Kuwait. ओके, So like पाकिस्तान और कुवैत आते जाते या रहते. And then for higher education, I went to Pakistan. I did my bachelor's in biotechnology from there. And so I was never very ambitious. My father really wanted me to pursue my MPhil. And I was like, beech mein rishta aa gaya. And also, I was like, I just want to get married. I was like that girl जो कि जिसको था कि बस मेरी शादी करा दें. ओके, ओके, आई गेट दैट। So then we moved here as I think since back then visa process used to take years, like हुँ, 3 years or so, and obviously my husband didn't want to wait that long, so he applied for a student visa for me, और वो easily मिल गया because I just submitted my thesis या and years. तो फिर I moved here in January 2014. Or yeah, ever since it's been amazing. There's been no looking back. वाओ दैट्स ग्रेट टू नो एंड और मोमिना लाइक अभी आप करेंटली कहाँ रहती हैं और उससे पहले आपने कोई किसी और सिटीज में आप रही हैं कनाडा में? बिल्कुल तो when I moved here, my husband he had like a condo in Etobicoke, जो कि like Dundas Street West. या It's like, या yeah, I hope you know, right? यस So एब्सोल्युटली। so we used to live there. Then जब शाज़ान होने वाला था my first son, तो फिर आई टोल्ड माय हस्बैंड कि अब उसने घूमना फिरना होगा. एंड ऑल्दो कॉन्डो लाइफ वाज अमेजिंग और सब सारी अम्यूनिटीज थी नीचे एंड ऑल, बट आई जस्ट फेल्ट कि मे बी दिस इज अ लिटिल छोटी है जगह हमारे लिए. सो ही सोल्ड दैट कॉन्डो एंड देन वी मूव टू मिल्टन. वी बॉट अ हाउस देयर और वहाँ पे भी लाइफ वाज अमेजिंग. वहाँ बहुत अच्छा कॉन्डो लाइफ में ना चीनी जापानी और बहुत से लोग इर्द गिर्द रहते थे, बट आई वॉज ऑलवेज इन द लाइक मुझे लाइक जिम भी था नीचे एंड पूल वगैरह, बट फॉर सम रीजन आई जस्ट नेवर आई वाज टू लेजी टू सोशलाइज और टू गो एनीवेयर. एंड लोग मुझसे पूछते थे डोंट यू गेट बोर्ड. एंड आई यूज्ड टू लाइक नहीं, आई यूज्ड टू लाइक मैं म्यूजिक लगा के खुद ही घर में डांस कर लूं, वॉशरूम जाके खुद ही तैयार होके अपनी पिक्चर. दिस नेबरहुड ऑफ आवर्स इन मिल्टन, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी. एक पूरे रो में लाइक पाकिस्तानी सारे लोगों के घर थे. एंड वहाँ पे आई लिव्ड देयर फॉर 5 years. और वहाँ पे आई मेट सम रियली अमेजिंग पीपल. और वहाँ पे काइंड ऑफ पाकिस्तानी मोहल्ला हमारा बन गया था जिसमें वी वर हैविंग दीज क्या कहते हैं बैकयार्ड पार्टीज एंड लेडीज की पॉटलक्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई यूज टू रियली एंजॉय. और जब मैंने सबको बताया कि अपने क्लोज नेबर्स को कि आई एम मूविंग टू ओकविल, तो दे वर लाइक रियली अपसेट. दे वर लाइक तुम इतनी खुश हो यहाँ पे और फिर जाने की बातें भी करती हो. बट ओकविल आने का की वजह ये थी कि आई मीन आई लव्ड माय हाउस देयर. बहुत अच्छी थी. एवरीथिंग वाज अमेजिंग. माय पेरेंट्स रियली गॉट अपसेट व्हेन दे गॉट टू नो कि हम वो घर छोड़ने वाले हैं, बिकॉज दे रियली लाइक दैट हाउस. और मेरे पेरेंट्स दे मेक फ्रीक्वेंट विजिट्स. इन लॉज में से भी पीपल दे या विजिट.
तो फिर ओक्विल आने की वजह ये थी कि एक दफ़ा ना मैं अपने हस्बैंड के साथ इस इधर ही घूम रही थी। आई जस्ट सॉ द रोड्स जो कि बड़ी थी, घर मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे एंड आई वाज़ लाइक वेरी fascinated एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आई रियली लाइक दिस एरिया एंड आई वुड वन डे वांट टू मूव हियर। तो आई थिंक जब you put it out in the universe, it's kind of like you're manifesting it, so Yeah, maybe exactly. then yeah, alhamdulillah फिर then we moved here. But alhamdulillah मेरे अभी भी उन neighborhood के अपने सारे जो friends थे उन सबके साथ I'm very close to them. और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आई तो my next door neighbor is a Pakistani. She's also amazing. She's like a friend now. And साथ वाले Chinese हैं, but they are also very sweet. So it's good. It's good. Yeah, that's great to know. And आपकी इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी और इतने अच्छे से गुज़री है, इट्स सो गुड टू नो। और इसके अलावा मोमिना आप हमें बताएँ कि लाइक जिस तरह अब मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने वाले हैं, अभी भी यहाँ हैं। तो आप ब्लॉगिंग फ़ील्ड में किस तरह एंटर हुई और अगर हम एज़ अ वुमन हम भी जाना चाहें तो उसके लिए लाइक क्या है? किस तरह आप एंटर हो सकते हैं एंड क्या फ़ायदे हैं उसके? सो कैन यू टेल अ लिटिल बिट अबाउट दैट? I think मुझे ऐसा लगता है कि जेन ज़ी व्हिच यू आर अ जेन ज़ी या हम हुँ, आई जस्ट फील कि मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक कि सोशल मीडिया इज़ ऑन द राइज़, हुँ, सोशल मीडिया का बूम है एंड लाइक you yourself mashallah you have a YouTube channel of yours which हुँ, is and you talk about issues, students related issue and so many other your own personal experiences या that help people navigate through their so जो भी उनकी academic life है. So I just feel कि with me the case was that I had always like a knack for taking pictures and I was always social media savvy even before marriage. And ओके, yeah, so I used to be busy editing my pictures all the time, and back in the day, I was an admin of a page also on Facebook, and I used to take my job very seriously. I used to ओह be like, वाओ! "Okay, मैं admin हूँ and all of that." So I was very serious about that also. But as I said, I was never ambitious, and जब मैं मिल्टन वाले घर में रह रही थी, so my next door neighbor, she's an 18-year-old and she became like very good friend of mine. And yeah, so like she's like 11 years younger than ओह me, वाओ! but we were like really good friends. तो जब भी मेरी कोई shopping like मेरे कपड़े वगैरह आते थे, I used to call her up कि यार आजा मेरा photo shoot सामने कर दो मेरा यहाँ कर दो photo shoot. She had a camera, so every other day we used to have this photo shoot done. एंड मैं अपने हस्बैंड को कहती थी अच्छा चलिए मैं जा रही हूँ मेरा फोटो शूट है एंड ऑल दैट आई वाज it used to keep me busy and happy. These are the little things I used to do for myself, for my sanity, to keep myself happy and busy. हुँ, क्योंकि you can't be a mother all the time. You या sometimes you want to break free from that and do something for your own self, right? As much as I enjoy motherhood, by the way, but हैविंग सेड दैट मैं फिर वो फोटोशूट्स वगैरह कराती थी. सो शी यूज्ड टू कीप टेलिंग मी कि यू ट्रीट योर पर्सनल इंस्टाग्राम पेज एज अ मैं क्योंकि कभी भी मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी ना नथिंग वाज एवर रैंडम. आई यूज्ड टू लाइक क्यूरेट एंड आई यूज्ड टू थिंक ओह! अबाउट ओके, एडिट होना चाहिए, एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए. आई हैड दैट थिंग. तो शी यूज्ड टू टेल मी ऑल द टाइम कि यू शुड डू समथिंग लाइक ब्लॉगर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, ये कर दो वो कर दो. तो शी यूज्ड टू कीप सेइंग मी दीज थिंग्स जो कि बैक इन माय माइंड वो थोड़ा चलता था. बट मैं यही सोचती थी यार बड़ी खप है. आई कांट everything. I mean, I just can't do it. So one day, she had her friends over to my place. उसकी दो तीन यूनिवर्सिटी की आई हुई थी एंड वी वर जस्ट हैविंग अ चैट जिसमें उसकी फ्रेंड्स ने मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे फॉलो किया एंड देन वो भी यही कहने लग गई कि यू शुड डू समथिंग एंड एंड आई वाज लाइक देखो हर कोई इतने ब्लॉगर्स हैं एंड एवरीबॉडी इज डूइंग सो अमेजिंग और इतना हाई उनका लेवल है. आई कैन नेवर मैच अप टू देम. या तो इतने एक उसमें मेरा क्या लाइक हुँ, एक क्या होगी क्लोज टू. या एग्ज़ैक्टली, तो दे सेड उनकी उसकी एक फ्रेंड ने एक ऐसी बात की दैट लाइक स्टक विद मी. उसने कहा कि इतने डॉक्टर्स भी तो हैं
तो इसका मतलब कोई डॉक्टर ना बने, इतने इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब कोई इंजीनियर ना बने। सो ये बात इट स्टेड विद मी, आई वाज लाइक यार इट मेक्स सेंस, आई मीन। उसके बाद ना वी वर इन दैट मूविंग स्टेज जिसमें हम मिल्टन का घर छोड़ के, तो उस ट्रांजिशन फेज में आई वाज रियली वांटिंग टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। आई वाज लाइक आई नीड टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल एंड आई वांट माय चिल्ड्रन आल्सो टू जॉइन मी। मेरे हुँ। बेटे क्लास में उसकी एक फ्रेंड थी हु हैड अ यूट्यूब चैनल ओह एंड शी वाह! 1 million सब्सक्राइबर्स। कैन ओह वाओ! एंड शी लाइक वो, यार वो क्या होता है जैसे रायन किड्स और इस तरह का नहीं होता, शी यूज्ड टू Yeah, शो। yeah, yeah. Yes, I understand, yeah. तो आई वाज लाइक I want my kids to talk about educational stuff, जो भी वो लर्न करते हैं वो एक्सप्लेन करें, इससे उनका उनका अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, Yeah, exactly. स्किल्स कॉन्फिडेंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं उनकी नर्चरिंग के लिए आई जस्ट फेल्ट इट विल बी अ नाइस थिंग, और मैं अपना भी चैनल शुरू करी। सो व्हेन आई मूव्ड हियर आई वाज टू लेज़ी, आई वाज लाइक यूट्यूब चैनल है सो आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे। अच्छा पहले घर सेट हो जाए देन आई विल स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। आई विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, कि घर दिखाऊंगी और कहूंगी कि इंटीरियर डिजाइनिंग एंड Yeah. ऑल। टू कट इट शॉर्ट, मैंने फिर ये एक दिन बैठे बिठाए सोचा कि ओके लेट्स मेक अ इंस्टाग्राम पेज, अ Uh-huh. पब्लिक page. I told nobody, like in my family. I just made the page and then I told my husband कि मैंने पेज बना लिया. He was the first one to follow me and then I told my best friend and then she followed me. And then मैंने अपने personal account पे बताया कि everybody. I just feel कि when you have that in you, और Yeah. आप you are passionate about something, uh, Mhm. and you have that creative streak, so don't shun it. I just feel कि I never planned anything, to be honest. Yeah. Okay. Everything fell in place at the right time, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी intentions अच्छी हो, and as I said, when you manifest and Yeah. you दिमाग में सोच लें कि ओके दिस इज समथिंग आई वुड लव टू परस्यू। नॉट दैट जब मैंने पेज बनाया था आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ बिकमिंग लाइक अ फुल फ्लेज्ड ब्लॉगर, बट आई हैड दिस वन इंटेंट, टू बी ऑनेस्ट। आई थॉट कि अगर 3 बच्चों के साथ मैं अपना टाइम एनर्जी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ, आई बेटर मेक मनी आउट ऑफ इट। Yeah. Exactly. टेंशन थी फ्रॉम द गेट गो। द रीजन व्हाई आई से दिस इज बिकॉज अगर कोई आर्टिस्ट है जो कि पैशनेट है अबाउट हिज पेंटिंग एंड ऑल, Yeah. और तो वो अपना टाइम जो लगाता है, ही वांट्स एक्नॉलेजमेंट, ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड टू बी Yeah. पेड ऑल्सो, आई जस्ट फील। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे। दुनिया में कहाँ है कि आप अपने पैशन से आप अर्निंग नहीं कर सकते। so ये both things, they, I think they're like they parallel हैं, and I just feel के yeah, तो that's how I pursued my passion. And तो अब जब मैंने ये शुरू कर दिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही मैंने शुरू किया ना, खुद ही अच्छे लोग मिलते गए, who were helpful and kind, and they told me कि ये कर लो वो कर लो, या they So connected. आपके yeah, so आपके like I see in your Instagram, so you have a like big circle of all the inspiring and such women और इतने सारे आपके किस तरीके से वो सारे connections बने through Instagram ही या आप personally जाके मिलती थी या कोई connection इस तरह होता था आपका? Quite honestly, मेरी पर्सनल लाइफ में ना आई हैव लाइक वेरी लेस फ्रेंड्स। as much as I'm like an outgoing person and very friendly, I just have like a handful of friends, or Okay. keep like really close to me. Baki, I'm very cordial and nice with everyone. Mm. जब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे दे हैव दीज ग्रुप्स जिसमें ब्लॉगर कम्युनिटी एक दूसरे को Oh सपोर्ट कर, yeah. Yeah, yeah. so that is how somebody added me in some group and then some other person added me in other. इस तरह करते I interacted with like DMs में I interacted with people. I started following them. They followed me back. और आहिस्ता करते करते bloggers meetups होने लग गए जिसमें they invited me. So initially I was very skeptical. I was like, I'm not that outgoing person. Like Exactly. like I love socializing and Yeah. meeting, but back then I hadn't started driving like Okay. करती थी। I had 3 kids,
Or and then I was like, I'm not this person who can be everywhere all the time and Yeah, cannot. exactly. I'm just not that person. So I used to be like, I cannot keep up with this. So should I be going to this meetup? Should I not? And then my husband was like, no, I mean, it's fine. I'll take care of the kids if you want to go. तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं शुरू-शुरू में जाके लाइक आई यूज्ड टू बी क्वाइट एंड देन ग्रेजुअली आई ओपन्ड अप बिकॉज़ आई वाज़ लाइक क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? बट आहिस्ता-आहिस्ता एंड जब मैं लोगों से मिली आई रियलाइज्ड कि द मोर रियल एंड ऑथेंटिक यू आर जितना आप एक अपने लिए अपने इर्द-गिर्द एक पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश Yeah, करते हैं ना perfect person and quiet person and you say the right things and you are correct, yeah, it doesn't resonate with people. If you are real, authentic, you are yourself, that is when people really connect with you. yeah, absolutely. तो That's true. पता था कि मेरे इंस्टाग्राम से तो सबको लगता है कि आई एम दिस लाइक क्वाइट एंड सोबर पर्सन बट एक्चुअली आई एम अ वेरी नोटोरियस एंड टॉकेटिव पर्सन एंड आई एम लाइक भौंकियां भी मारती हूँ लोगों के साथ आई फेल्ट कि आई गेट एक्सपोज सबको पता चल जाएगा कि आई एम नॉट दिस इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि आई लाइक Mm, ट्राई टू बी ऑन माई पेज लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैंने भी बहुत लर्न किया टू बी ऑनेस्ट लोगों से मिलके yeah, इतने the businesses I worked with, the brands I worked with, the people that I interacted with, इतनी इंस्पायरिंग लेडीज हैं एंड जो ये ब्लॉगिंग की फील्ड है ना इफ यू लुक एट माय इनसाइट्स तो yeah, 90% लेडीज हैं मेरे अकाउंट में yeah, absolutely, yeah. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मोर लेडी ब्लॉगर्स Yeah, because like that's what it is कि इवन के मैं भी जो हूँ like मैं भी इवन के यहाँ पहले से मैं कर रही थी पर जब मैं भी यहाँ आई so I was like more into क्या किस तरीके से करते हैं so how to connect with people और आप किस तरीके से all that good things that PR packages and brands के साथ connect करना it और यही I think with the passage of time ये और जितनी ज़्यादा लड़कियाँ और all the women they all want to be like that तो लाइक आपने किस तरीके से फिर ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड दैट जर्नी एज़ वेल? यार देयर दिस ब्लॉगर कॉल्ड महविश जिनके बारे में मैंने अभी अपने पेज में स्टोरीज में एक दो दिन पहले जिक्र भी किया था सो शी वाज लाइक शी वाज गिविंग दीज कोचिंग सेशंस ऑन हर पेज लाइक शी हैड या सो शी वाज गिविंग दीज कोचिंग लेसन्स और मैंने एक आधे घंटे का कोचिंग लेसन उनसे लिया वेयर आई टोल्ड हर दैट आई वांट टू डू पेड कोलैबोरेशंस हुँ, एंड want to like work and she said कि she guided me and बहुत एक छोटा सा सेशन था बट इट वाज वेरी इंसाइटफुल और मुझे ना बूस्ट मिला बट आई वाजंट लाइक इवन 1K बैक देन लेकिन फिर भी ओह! लाइक कॉन्फिडेंट इनफ टू रीच आउट टू ब्रांड्स और मैं लाइक बड़े से बड़े ब्रांड को भी रीच आउट कर लेती थी बिकॉज आई वाज नाइव दैट वे एंड आई रियली डिडंट केयर तो मैं हर एक को अप्रोच करती थी एंड सब तो मेरा पहला जो ब्रांड था जिसके साथ मैंने एक्चुअली काम किया दैट वाज हंस डेयरी जो था दे एंड दे पेड मी वेल जबकि मेरा लाइक कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था वाओ! that was like a big achievement for me and I was like very overwhelmed and happy about it but then उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दफा so once it started like एक दफा जब you know आपकी क्रिएटिविटी ना these brands they put your creativity to test या, आप to give like आप चाहते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट उनको अपना कंटेंट बना के या, दें एंड वो जो एक एक्साइटमेंट थी और एक वो जो एक नर्वसनेस थी और एक वो था ना जो थ्रिल था उस चीज का आई रियली एंजॉयड इट एंड देन आई okay I love content creation and I love working for brands and I love doing these things for my own self and to prove कि I have this in me तो फिर उसके बाद once I did it and I felt कि okay this is good money and with 3 little kids at home this is the maximum like for now I can do या, या, and do ओके, I went all out and I was like, okay, I have to do this. I have to make this happen for myself.
और फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, सो आई हैव ऑलवेज रीच्ड आउट टू ब्रांड्स माई सेल्फ। इनिशियली बहुत ऐसा होता था, एंड यू नो आई यूज टू वर्क विद लोग जिनको स्मॉल बिजनेसेस कहते हैं। आई जस्ट फील कि इट्स लिटिल, आई जस्ट डोंट लाइक द टर्म, आई से बडिंग Yeah, बिजनेस। exactly. They are putting so much hard work. Why is it a small business? I think nobody is small. I Yeah. just I take this so personally, but I just feel बडिंग बिजनेसेस के साथ भी मैंने बहुत ज्यादा काम किया। एक पॉइंट आया व्हेन पीपल यूज्ड टू बी लाइक, यू नो मोना तुम्हारा पेज ना थोड़ा दुकान टाइप लगता है, यू ऑलवेज selling stuff. And you know, I understood where they were coming from. It was like from a very good intent or coming from a very nice place of concern and all. But I just felt that, you know, for me to build my portfolio, for Right. me also learn the skills. You know, Yeah. जब आप के लिए भी कंटेंट बना रहे होते हो, you're actually you know working on your skills and Yeah, you improve. are learning so many things. आपको तो इतना कुछ पता भी नहीं होता कि वो चीजें exist करती हैं, but जब आप काम करना start करते हैं, so there is so much to do. तो मैंने अपने इस बात में ना एक चीज की है कि आई लिसन टू एवरीवन, बट आई डू व्हाट comes naturally to me, what I feel is right, and I always listen to my heart. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि you know you can't be doing so many things, या तो आप फूड ब्लॉगर हैं या फिर आप you know maybe like you're a beauty blogger, whatever. Somebody is inviting me, I would love to go and check out their food and create content for them. So मैं like I just feel that if I can do bit of everything, then why not? Why limit myself and why box myself unnecessarily कि you know मैं ये हूँ तो मैं और कुछ नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है आप एक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। Exactly. Yeah. बहुत से तो आपको रीच आउट करते हुए पहले आपका पेज देख के वो कहते हैं कि ओ ये तो लाइक कंप्लीटली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम नहीं इनके साथ कर सकते। तो मेरा इसलिए यू नो आई एम ओपन टू Yeah. ऑल काइंड वर्क इन एवरीथिंग, यू नो। Yeah, that's good to know. तो मोमिना अगर like अब like जिस तरह मे बी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक एक स्टडी परमिट रूल है, सो दैट यू हैव टू वर्क 20 आवर्स, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। सो मैंने बहुत ज्यादा देखा है, अब मेरे अपनी जो क्लासमेट्स हैं, दे वर्क लाइक हर वक्त जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स करते रहते हैं, फुल टाइम जॉब। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर वो इस फील्ड में एंटर हो, लाइक वो आके इस फील्ड में एंटर हो, सो लाइक इज इट वेरी सैचुरेटेड, वो नहीं अपनी आइडेंटिटी बना सकते, उसे अर्न कर सकते हैं या नहीं? लाइक एज अ स्टूडेंट इज इट गुड कि उसमें कर सकते हैं हम कि नहीं, स्पेशली एज अ फीमेल, एज अ वुमेन? आई थिंक एब्सोल्युटली नो फील्ड, यू नो किसी भी फील्ड में जाने से पहले यू विल ऑलवेज फील कि यू नो देयर देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ पीपल एंड एक ओशन है, एंड मे बी यू नो जैसे मैं भी थोड़ा सा फील करती थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई टुक सो लॉन्ग एंड आई वाज जस्ट कंटेम्पलेटिंग एंड आई Yeah, yeah, yeah. एबल टू मेक माई माइंड। क्योंकि मुझे जो आपका एक अपना टच है ना, जो आप हैं कोई नहीं हो सकता, यू नो। एंड ये मैं हमेशा फील करती हूँ व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद अदर ब्लॉगर्स एंड यू नो हम काम डिस्कस कर रहे होते हैं, आई एम लाइक हेल्पिंग या यू नो, तो एवरीबडी इज लाइक यू नो तुम कैसे बता देती हो हमें और ये कैसे हमें हेल्प कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका है। मेरा आपको कुछ बता देने से मुझसे कुछ नहीं जाए, लाइक मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई जस्ट फील कि व्हेन दो तीन चीजें हैं जब आप किसी भी फील्ड में जाएं, व्हेन योर इंटेंट इज राइट, व्हेन यू आर आपके बेसिक जो आप अननोइंगली कोई goof up मारे या अनइंटेंशनली कोई चीज गलत कर दें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट Yeah. हेड यू शुड नो दैट योर इंटेंट इज राइट, आपकी थिंग्स आर एथिक मॉरल वैल्यूज एवरीथिंग इज इन प्लेस इन चेक, और आप हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं और दूसरों के लिए हेल्पफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह मियाँ खुद आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर। बिल्कुल हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू फील कि यू हैव, अब जैसे कि एक लंदन में एक ब्लॉगर हैं हु लाइक हु पाकिस्तानी ब्लॉगर थी, शी जस्ट रिसेंटली मूव टू लंदन। आई डोंट नो कार रूट्स है या आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट ओके।
handle is a little वो. But anyhow, so she is a student and she is उनके 100,000 like कुछ है उनके वो. So she makes these funny videos and वो कोई relevant like society पे एक satire होता है उनका है वो she makes these good videos. Or she's like she gets brands also sometimes, but I feel कि I'm sure she's earning through it. या maybe ये एक आपका creative outlet होता है. ज़्यादातर कि औरतें इसलिए भी कर रही हैं किसी भी इस फील्ड में ज़्यादा औरतें इसलिए हैं क्योंकि बहुत सी लेडीज हैं जो जब कनाडा मूव करती हैं और अगर उनकी मेरी तरह शादी हुई होती है तो और वो दे आर बिजी विद मदरहुड या वो एक डोमेस्टिक सेटअप में बिजी हैं Yeah. तो एंड दे आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो तो या वो सोचती हैं कि चलो हम बुटीक कर लेते हैं क्योंकि अभी पढ़ने में टाइम लगेगा बच्चों के साथ चलो बच्चे स्कूल चले जाएंगे सो वील रिज्यूम आवर स्टडीज Yeah. बच्चों बच्चों आपकी हर डिसीजन लाइफ का बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है Yeah. एनीवे तो वो आप इट टेक्स तो वो समझती है क्योंकि घर से दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू अब अगर मैं ये ब्लॉगिंग ना करती आई डोंट थिंक कि मैं जितनी अमेजिंग लेडीज से मिली हूँ अब तक वो मैं मिल पाती Yeah. जिस मैं अक्सर मिलके सोचती हूँ कि मेरे इनसे पाथ कैसे हम लोगों का क्रॉस हुआ है और हम कैसे मिल रहे हैं और अल्लाह मियाँ ने कैसे हम सबको और आई हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द लेडीज चाहे वो कोई भी उनकी नीश हो या जो भी उनका वो बिल्कुल. एंड एंड आई टेल यू कि आप कह रही थी ना कि यंगस्टर्स के लिए और जो स्टूडेंट्स के लिए आई जस्ट फील कि देखिए डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की क्या लाइक रिक्वायरमेंट है कुछ बच्चे होते हैं जो कि लाइक उनकी लिए एक काइंड ऑफ ज़रूरत होती है टू मेक मनी दे कांट वेट कि हम अपनी पोर्टफोलियो बनाते रहें और फिर Yeah. बिल्कुल. ब्रांड कभी मिलेगा नहीं मिलेगा सो दे वांट कि हम स्टारबक्स में या पिज्जा हट में वी वांट दैट इनकम जो हम want to generate income. So I just feel कि if they are privileged enough where they can take the leeway or they do have that time कि हम ये simultaneously करते हैं and one day मुझे ऐसा लगता है कि treat it as a side hustle. Yeah. Yeah. आप फोकस अपना एजुकेशन पे रखें आप पार्ट टाइम अपना कुछ वो भी करें एक लाइक अब जैसे कि मैं ये कर रही हूँ एंड आई टोल्ड माई फादर द अदर डे कि अब्बू ये तो मुझे ना बिजनेस की तरह लगता है कि हर महीना जब स्टार्ट होता है ना यू नेवर नो वेयर दिस इज गोइंग Yeah. I know so many of my blogger friends who are like very chilled out about their pages और वो बड़ा relax they don't intend to make money Mhm. they're not looking for brand deals they're happy with however they're Yeah. मेरी जो इंटेंट है ना दैट इज वेरी डिफरेंट आई जस्ट फील कि अगर मुझे चिल करना है ना तो उसके लिए मेरा पर्सनल पेज था Yeah. आई वाज वेरी मच एंजॉयिंग दैट पेज आल्सो पब्लिक करने का मकसद यही है कि आई जैसे शावीर जाफरी जैद अली टी ऑल दीज पीपल दीज आर द ये कैनेडियन यूट्यूबर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे कैन डू इट Yeah. so can we एंड मैं इसको एज लाइक प्रॉपर वर्क लेके चलती हूँ लाइक मेरे लिए मेरा पेज इज नॉट लाइक कभी कभी मैं थोड़ी स्निपेट्स हेयर एंड देयर आई डू शेयर अ बिट ऑफ माय लाइफ हेयर एंड Yeah. देयर Yeah. yes but it's more work related to be honest Yeah. how I want it to be for now because I take this as a job and this is my first ever job in my entire life so I take it like very seriously and that is why I'm always like hustling and wanting to make money and wanting to do something because पहली दफा जिंदगी में मैंने earn किया है not that I need it but it's something that makes me so happy Yeah. Exactly. satisfaction and validation I get from my own self is unmatched and quite honest Absolutely. I'll tell you कि क्या कहते हैं I was never ambitious in my entire life but I feel कि जूं the more money you make the more you feel कि you feel empowered you want to do more of Exactly. And you are like कि like इस तरह होता है कि मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ और ज्यादा ड्रीम्स आप और गोल्स आप सेट करते हैं और ज्यादा ड्रीम्स होते हैं आपके so yeah it's quite good.
The other day I had a young girl who was like, I want to complete my like she's on the verge of completing her education. She was like, मैं जॉब करना चाहती हूँ और 1-2 साल में जॉब करूंगी and then I'll think about marriage and all, which is great. But मेरी आइडियोलॉजी ये है कि if you get a if you're blessed with a good life partner and you have supportive parents, it's never too late. Yeah. अभी 31 with 3 kids और मैं अब लाइफ की अब जाके मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है. नॉट दैट आई डिड नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज बैक देन. मैं exactly. शाज़ियान से पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू परस्यू कर सकती थी एजुकेशन. आई हैड अपॉर्चुनिटीज बट आई वाज जस्ट मेरा माइंडसेट वो कभी था ही नहीं. चिल कर रही थी लाइफ में एंड आई वाज लाइक द हैप्पीएस्ट बीइंग अ मदर और आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट माय लाइफ और मुझे बस था कि बच्चे होने चाहिए मेरे एंड आई ऑलवेज वांटेड मोर किड्स और मेरा माइंडसेट कुछ उस तरह का था. Now I feel कि as I'm growing older and evolving with time, I feel कि चीजें बहुत change हो गई हैं. Yeah. So now I'm like कि and I would highly recommend and suggest all the youngsters out there कि आप अगर आपको पेंटिंग का शौक है and I mean you're working full time, जो भी आप पार्ट टाइम जॉब करें and पढ़ रही हैं, उसके साथ आप अपनी क्रिएटिव जो आपकी जो भी स्ट्रीक है प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट. I know so many girls जो कि कुछ अरसे बाद अपनी पेंटिंग्स they start selling them. कुछ हैं जिन्होंने हल्का फुल्का अपना पेज लेके चल रही होती हैं देन वो कब ग्रो कर जाता है. तो आई जस्ट फील कि आप जिस चीज में भी आपका जहन है ना और दिल चाहता है, जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड डू इट रिगार्डलेस. डोंट थिंक ऑफ द कि क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. आई फील कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि कभी कॉन्सिक्वेंस नहीं देखती. आई एम वेरी डम लाइक दैट. लाइक आई जस्ट फॉलो माई हार्ट ब्लाइंडली. सो आई रियली डोंट केयर कि व्हाट मे फॉलो. या Oh, well, that was so good to know. इतनी ज़्यादा डिटेल थी and thank you so much for sharing so much. मुझे तो बातें बोलने को. It was so good to know, Momina, all the blogging life और हम आपको देखते रहते हैं and definitely अब मेरी audience और जो मेरे viewers हैं वो भी जरूर आएंगे आपको देखने के लिए अब. So आपके और followers आने वाले हैं, hope so. So thank you so much. It was a pleasure talking to you. Youngsters like you are an inspiration for so. And I mean, I couldn't be more thankful to you. And I am nowhere close to being like an inspiration to anybody. Or now, like I don't feel that I'm famous yet. There's a lot to achieve in life. There's so much. Absolutely. लेकिन यह है कि for you to even think of interviewing me is like it was more like a gupshup, but I'm very thankful to you and I thoroughly enjoyed the experience. Yeah, no problem at all. And thank you so much for being with us, Momina. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely.